For this DIY, I have taken some cardboard cutouts. The measurements are on the cardboards. At first, I am making the basic structure of the birdhouse. To stick those cardboard, I am using hot glue. The steps that you can follow are in the video. Our structure is almost ready. I am filling those gaps using hot glue. Now my basic structure is ready, and with the help of the masking tape I will secure the sides. In that round window, I am using small pieces of masking tape. If you want, you can use tissue paper and glue. Now I am applying a thin layer of texture paste. I have applied 2 coats of it. When first layer is dry, then you can only apply the second layer. Now I am going to decorate my birdhouse. To decorate the birdhouse, I have taken some air dry clay. I am creating a little door for my birdhouse. I am using a clay modeling tool here, but you can use whatever you have at home. You don't need any specific tool to create that door basically. To give the realistic look of my door, I am creating some pattern here to give a wooden texture. मैंने यहाँ पे डोर का बॉर्डर क्रिएट करने के लिए ऐसे छोटे छोटे लाइंस बनाए हैं और यू कैन सी द बॉर्डर्स लुक्स रियली नाइस एंड द पैटर्न इज़ वेरी क्लियर. एक छोटा सा हैंडल लगा देंगे डोर के ऊपर. Now I am decorating the window. You can see the way I am decorating. You just can follow the steps.
विंडो का बॉर्डर हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ छोटे छोटे लीव्स बनाए हैं जो मैं उसके साइड में स्टिक कर दूंगी। I'm just doing some detailing on those leaves so it can give you a realistic look. I have collected some stones from my back garden. Do not forget to wash them, guys, before you use it, as they are very muddy. अब मैं इसके रूफ को तैयार करने के लिए आई एम यूजिंग सम वुडन स्क्यूअर्स, सो इससे लगेगा कि ये बिल्कुल स्ट्रॉ से बने हुए हैं। साइजेस आप अपने हिसाब से कट कर लेना, देन विद द हेल्प ऑफ द हॉट ग्लू यू जस्ट स्टिक देम ऑन द रूफ। देखो रूफ भी तैयार हो गया, दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल गाइस। रूफ तैयार हो जाने के बाद ये मेरा बर्ड हाउस भी कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। अब मैं उसके ऊपर पेंट अप्लाई करूँगी। हियर आई एम यूजिंग येलो एक्रेलिक पेंट। मैंने डोर को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 2 शेड्स ऑफ ब्राउन यूज़ किया है, जिससे कि मुझे डोर का जो नाइस कलर चाहिए था वो आ जाएगा। Now I'm using the dark brown color so I can highlight the pattern which I made on the door. अभी मैं विंडो को भी कलर कर लूँगी। यहाँ पे आई एम यूजिंग ग्रीन एक्रेलिक पेंट। नाउ धीरे धीरे मैं इसका लीव्स को भी कलर कर लूँगी। अभी मैं इसके बेस को कलर कर रही हूँ। बेस के लिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंट शेड का ग्रीन यूज़ किया है। अभी मुझे बर्ड हाउस को इसके ऊपर स्टिक करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑल पर्पस एडेसिव यूज़ किया है और थोड़ा सा हॉट ग्लू भी मैंने इसमें यूज़ किया है। Use some hot glue on the side as well so you can secure the house properly.
Now I'm sticking those stones over here with the help of the silicone glue. I'm making some small flowers over here. अभी मैं साइड में ग्रास बना लूँगी। मैं ग्रास बनाने के लिए 2-3 शेड ऑफ ग्रीन का मैंने यूज़ किया है। आप देख सकते हो मैंने कैसे इसको बनाया है। नाउ आई एम मेकिंग सम स्मॉल फ्लावर्स। इस फ्लावर्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रश का यूज़ किया है। कलर यू कैन चूज़ वट एवर कलर यू लाइक। इट्स वेरी इजी, यू कैन फॉलो द स्टेप्स इन द वीडियो। ऐसे छोटे छोटे डिटेलिंग अगर आप करोगे तो ये दिखने में और भी सुंदर लगता है। इट विल गिव यू अ रियलिस्टिक लुक। मैं यहाँ पे वुडन स्क्यूज के ऊपर एक वुडन डाई यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो एक्रेलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हो। After finishing everything, don't forget to apply a coat of varnish. We have to keep this birdhouse under the shade. हम लोग इसको धूप में नहीं रख सकते। That's it for today, guys. If you like my video, please like, comment and share, and don't forget to subscribe to my channel. My DIY Diaries is signing off today. I see you in my next video. Till then, bye bye.